Hey guys, अपन एक problem solve करते हैं which was asked in Sprinklr this year. So the problem is, again as usual I would ask you to pause the video, try to solve it yourself and then look at the solution. I hope you've done it. So अपन आगे बढ़ते हैं. So the problem is, you're given an array A of size n consisting of non-negative integers and find the number of subarrays of ARR which are special. ठीक है? Okay. So what is a special subarray? A special subarray is one जिसमें the product of the maximum element and the minimum element in the subarray is divisible by the length of the subarray. ठीक है, बेसिकली अपने को एक एरे दे रखा है. ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे. लेट्स टेक 0, 1 and 3 and we have to take a subarray. Subarray is just one continuous segment of a array. Let's say this is the subarray we take. So our subarray is 1, 3 and what we have to do is this will be good if the maximum element into the minimum element of this subarray is this thing is divisible by the length of the subarray. So for this particular scenario, the maximum is 3, minimum is 1 and the length is 2. So this definitely does not qualify as a good subarray because obviously 3 is not divisible by 2, so this does not count as a good subarray. Let's take another one, 0, 1, 3. So for this subarray, the maximum is 3, minimum is 0, so the product will be 3 into 0, which is 0, and the length is 3. So 0 is obviously divisible by 3, 0 is divisible by every number, so this qualifies as a good subarray. So we have to count the total number of good subarrays of a given array. Cool. So let's look at the constraints first of all. n जो दे रखा है that is less than equal to 5 into 10 raised to power 4. This is the most important thing. तो अपन ट्राई करते हैं कि कुछ ब्रूट फोर्स पहले सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं. तो लेट्स सपोज अपने को एरे दे रखा है. ठीक है, A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन. व्हाट इज़ द ब्रूट फोर्स दैट वी कैन थिंक ऑफ. अपन एक तो एक स्टार्टिंग पॉइंटर ले लिया एंड एक तो एंडिंग पॉइंटर ले लिया. सो दिस इज द सब एरे वी आर कंसिडरिंग एंड विल डू इट फॉर ऑल सब एरेज. एंड what we will try to do is कि अपन इसमें एक बार ट्रैवर्स कर लेंगे. once we have the starting and the ending, उसमें अपन एक बार ट्रैवर्स करते हैं तो we'll know what is the maximum, we'll know what is the minimum, and if we have the starting and the ending, we obviously have the length of the subarray, and we'll see if max into min is divisible by length, and then if it does, then we'll do an answer plus plus, otherwise we'll not do anything. So this is the brute force that we can think of. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी. एक तो अपन अगर अपने को स्टार्टिंग चूज़ करना है तो देर आर एन ऑप्शंस टू चूज़ द स्टार्टिंग पॉइंटर, देर आर एन ऑप्शंस टू चूज़ द एंडिंग पॉइंटर, एंड टू ट्रैवल or to traverse the array between the starting and the ending will take another order in time. So overall time complexity will be order n cube, and which will definitely give tail because n is up to 10 raised to power 4. तो अपन क्या कर सकते हैं, एक तो बेसिक ऑप्टिमाइजेशन ये अपन कर सकते हैं कि ये जो n अपन यूज़ कर रहे हैं टू फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ अ गिवन रेंज, दिस वी कैन प्री कंप्यूट. हाउ. एक तो अपन पहले ट्रैवर्स करते हैं हर i से j के लिए for every starting and ending, and we pre-compute, let's say pre-compute, we have an array pre which stores a pair of I, j. This stores the maximum in the range I to j and minimum in the range I to j. This we can very easily do because this will be basically a recursive approach. So prefix of I, j will be maximum of prefix of I, j minus 1 and the element at j, and minimum will be same, minimum of prefix of I, j minus 1 and the element at j. So this we can pre-compute in order n square, and then again we'll have this pre-computed, then we can solve this problem. We'll get rid of this n here and then solve it in n square. So overall time complexity will be n square, but this too fails because n is up to 10 raised to power 4. So this also we cannot do, so we have to think of something else. So this is where अपने को कुछ ऑब्जर्वेशंस करने होते हैं कि क्या क्वेश्चन में हिंट है जिससे अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो विल गो बैक टू द क्वेश्चन स्लाइड, एंड इफ़ यू कैन नोटिस वन बिग हिंट इज़ ARR ऑफ I इज़ लेस देन इक्वल टू 30. सो इसको अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं. सो इफ़ ऑल एलिमेंट्स इन द एरे आर लेस देन इक्वल टू 30, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द मैक्सिमम ऑफ द एरे. मैक्सिमम विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 30 and minimum obviously will also be less than equal to 30, right. So the product maximum into minimum
this will be less than equal to 900. Can we say that? Obviously we can say that. तो अपना ये जो है, the thing which we want to divide the length with is less than equal to 900. So this is the hint कि we should never look for lengths greater than 900, or we should only look for lengths which are like less than 900, less than or equal to. So this is the very big hint. So whenever we choose an I and we are choosing a j, we are traversing for all j's, whenever we reach a situation in which the length exceeds 900, we'll break out of the loop, because we want to divide, let's say, a number by another number, and this number can never exceed 900. So is it beneficial to ever check for this number which is greater than 900? It is not, right? Because a number greater than this number cannot divide that number. Cool. So that is the basic approach that we are trying to do. So again, how we'll approach? So we'll traverse for every I and we'll go till every j, and if j minus I plus 1, which is basically the length of the subarray, exceeds 900, we'll break. Otherwise what we will do is we'll also on the way pre-compute the maximum and minimum between I to j, which is very easy to do, and then we'll obviously know the length, और अपन क्या कर देंगे, इसका प्रोडक्ट अगर लेंथ से डिविजिबल है देन विल डू एन आंसर प्लस प्लस, अदरवाइज विल नॉट. ठीक है, तो दिस इज मोस्टली द सॉल्यूशन. लेट्स जस्ट मूव टू द कोडिंग पार्ट एंड सी हाउ डू वी इम्प्लीमेंट दिस. ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं कोड करना. आई सेट अप द बेसिक टेम्पलेट, आई एम टेकिंग द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस एंड देन कॉलिंग द फंक्शन सॉल्व. अपन देखते हैं कि अपने को क्या क्या चाहिए. सबसे पहले तो अपने को n चाहिए होगा, लेंथ ऑफ दिस एरे, सो विल टेक इन n. उसके बाद अपने को एरे चाहिए होगा, तो जस्ट डिक्लेयर अ वेक्टर of int v of size n, and let's just take the input I equals 0, I less than n, I plus plus, if I can write that correctly, c in v of I. ठीक है, that is cool. Also I will maintain a global maximum n जो कि 900 होगा, because I'll be using this quite often. ठीक है, तो अपने को चाहिए क्या, अपने को एक तो मैक्स मिनिमम का स्टोर करना था, तो अपन एक 2D वेक्टर रख लेते हैं. लेट्स जस्ट कॉल इट मैक्सी. लेट्स जस्ट कीप 2 डिफरेंट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम. एक में भी अपन कर सकते हैं वेरी इजीली, बट फॉर सिंप्लिसिटी अपन 2 रखते हैं. ये n लेंथ का होगा और ईच एलिमेंट विल बी अ वेक्टर ऑफ इंट ऑफ साइज 900. ठीक है, क्योंकि अपन फॉर एवरी स्टार्टिंग पॉइंट विल नेवर गो टू अ लेंथ मोर देन 900. ठीक है, और अपन एक मिनिमम भी रख लेते हैं. ठीक है, मैक्सी मिनिमम. फिर अपन क्या करते हैं, फॉर अपन आइटरेट करना स्टार्ट करते हैं. इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस. सो आई इज द स्टार्टिंग. ठीक है, आई से अपन स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, एंड अपन एंडिंग में कोई चूज करना हो, इंट जे इक्वल टू आई से कर सकते हैं, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस. ठीक है, सबसे पहली चीज अपने को ये चेक करना है कि इफ एक तो अपन लेंथ डिफाइन कर लेते हैं, इंट लेन इक्वल्स टू जे माइनस आई प्लस 1. ठीक है, ओके. So we'll check if len greater than now 900, तो अपन वहीं से मेक कर जाएंगे. In fact just keep it in, then we'll just break out of this loop, मतलब अपन सेकंड वाले लूप से बाहर निकल गए. अदरवाइज अपन क्या करेंगे, we'll have to see maximum and minimum in this range. तो maximum of, इसमें दो केसेस होते हैं, या तो जे आई के बराबर है या जे आई के बराबर नहीं. तो लेट्स कि जे आई से बड़ा है, तो we'll see maximum of I and length will be what, max of maximum of I length minus 1, मतलब इससे जस्ट पिछला सब एरे और वेक्टर ऑफ j. अब दिस इज अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि अगर अपने को लेंथ लेट अस से I से लेकर के लेट अस से 8 तक का मैक्सिमम चाहिए, तो वी कैन जस्ट डू मैक्सिमम ऑफ I से लेकर के 7 तक का और v of 8, राइट? ऐसा बन कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. और उसके बाद मिनिमम भी विल बी कैलकुलेटेड इन अ सिमिलर मैनर. तो मिनी and this will be mini as well, and this will be minimum. ठीक है, तो ये हुई बात. उसके बाद अपन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. तो लेट्स जस्ट कॉल इट, लेट्स डिफाइन अ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्टार्टिंग में. इंट mx इक्वल्स v of I, इंट mn इक्वल्स v of I. ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ पे भी अपडेट कर देते हैं mx इक्वल्स टू दिस थिंग, एंड
mn इक्वल्स टू दिस थिंग, और अपन चेक करते हैं इफ mx इंटू mn, ये अपना प्रोडक्ट आ गया, एंड इफ दिस इज दिस मॉड्यूलो द लेंथ इज इक्वल टू 0, तो अपन आंसर प्लस प्लस करेंगे. व्हाट इज आंसर, पहले अपन आंसर डिफाइन कर लेते हैं, एंड आंसर बराबर 0. ठीक है, कुल. दूसरी बात क्या हो सकती है कि ओके, सो आई मेड अ मिस्टेक हियर, लेंथ -1 हो गई, इससे जस्ट पहला वाला. कूल. तो दो केसेस हो सकते हैं, अगर लेंथ 1 है तो वी डोंट हैव एनीथिंग फॉर लेंथ 0. सो अगर लेट्स जस्ट डू वन थिंग, इफ i इक्वल्स टू j, तो अपन क्या करते हैं, then will not do anything, then just do maxi of i1 will be equals to mx, है ना, and maxi of mini of ij will also be equal to mn, which are the same actually. ठीक है, तो and this will be else के अंदर, तो अपन कॉपी कर लेते हैं और ये यहाँ गया. ठीक है, एंड या यही है बेसिकली, और तो आई डोंट थिंक आई एम मिसिंग एनीथिंग. अपन ने स्टार्ट चूज़ किया, फिर अपन ने मैक्सिमम और मिनिमम डिफाइन किया क्योंकि इनिशियली स्टार्ट वाला एलिमेंट ये, फिर अपन मूव करना स्टार्ट किए, और लेंथ डिफाइन कर लिया. अगर लेंथ कैपिटल एन से बड़ा है तो ब्रेकआउट कर गया. इफ आई इक्वल टू जे यानी कि यूनिटरी एलिमेंट है, तो आई मीन यूनरी एलिमेंट है, तो बस दिस इज लाइक इनिशियलाइजेशन स्टेप. तो मैक्सी ऑफ i1 और मिनिमम ऑफ i1 को अपन ने इनिशियलाइज कर दिया. अदरवाइज व्हाट वी डू इज, okay, so I think we should set it to 900 plus 1 because the length can be 900. ठीक है, cool, and the length और फिर अपडेट करते गए i -1 और vj this is cool. हाँ, फिर चेक कर लिया मैक्सिमम टू मिनिमम का प्रोडक्ट is modulo length is equal to 0, तो आंसर प्लस प्लस कर दिया. ठीक है, and in the end we can just print the answer, see out answer handle. ठीक है, तो let's just run the code and see what output it gives us. जो टेस्ट केसेस दे रखा था इन्होंने, which was like for the array 1 5 the answer is 2, and for the array 0 1 3 the answer is 5. let's just see if we get these answers. तो अपन पहले रन कोड करते हैं. let's just create a new terminal. ओके, तो पहले अपने को टेस्ट केसेस लेने, तो ले लिया. व्हाट एल्स डू वी नीड, आई थिंक आई शुड हैव टेकन 2, बट ठीक है. एन सबसे पहले तो इस टेस्ट केस को ट्राई करते हैं. तो लेंथ इज 2 एंड एलिमेंट्स आर 1 and 5 एंड वी आर गेटिंग 2 एज द आंसर. तो सही है, एक और बार ट्राई करते हैं. लेट्स टेक अनदर टेस्ट केस एंड द एलिमेंट्स आर 3 एलिमेंट्स और 0 1 3 एंड वी आर गेटिंग 5. तो ठीक है, परफेक्ट है बेसिकली. तो अपन देखते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी एक बार. द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो भी आएगी, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइम्स द लूप रन्स एक्चुअली. तो लूप पहला वाला लूप रन हो रहा है n टाइम्स और दूसरे वाला लेंथ एट मैक्स 900 टाइम्स रन होगा. तो कॉम्प्लेक्सिटी विल बी 900 इंटू n, विच इज 900 इंटू 5 इंटू 10⁻⁴, विच इज 45 इंटू 10⁻⁶, I think, which works. It's tight but it works. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, एक तो अपन ये एरे स्टोर कर रहे हैं. आई एम नॉट कंसिडरिंग द इनपुट एरे बिकॉज ये तो अपन को लेना ही है. अदर देन दैट अपन ये जो दो एरे स्टोर कर रहे हैं, दो 2D एरेस, तो उनका स्पेस लग रहा है 2 इंटू 9 कैपिटल N इंटू 900. ठीक है, तो दिस इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विच इज अगेन 45 इंटू 90 इंटू 10⁻⁶, I think. ठीक है, तो one take home task that you can take is how can you do it with space complexity order 1. This is very easy to do it, but आप ट्राई करना इसको कैसे कर सकते हैं. ठीक है, बेसिक ऑप्टिमाइजेशन है. तो if you can solve it then do write it in the comments, otherwise let me know, I'll help you do it. ठीक है, this is your take home task. Otherwise that was mostly the problem. I hope you liked it. You can ask me in the comments what else do you want, what kind of problems or maybe theory courses. ठीक है, and I'll try to bring up something like that. ठीक है, bye bye.